Hello dear students, today Maths 2, chapter number 2, Sequences and Series, exercise 2.2. See question number 10. If Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n and 3n terms of a GP respectively, then verify that Sn multiplied by S3n minus S2n equals S2n minus Sn the whole square. So what is given here? Sum of n terms, that is Sn, sum of two terms, that is S of 2n, and sum of 3n terms, that is S of 3n. For a GP, that is geometric progression, we have to verify, or you can say to prove that Sn into S3n minus S2n equals square of S2n minus Sn. For the proof, let A and R be the first term and common ratio of a GP respectively. So A here first term and R is the common ratio, and we know that Sn formula, so Sn equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. This is very simple and you know very well this formula, sum of n terms of a GP A multiplied by R to the power n minus 1 upon R minus 1. Similarly, sum of two n terms, and it is denoted by S2n according to the question it is given here. So S2n equals A into R raised to 2n minus 1 upon R minus 1. Here R to the power 2n minus 1 upon R minus 1. Similarly, sum of the three n terms, that is S3n, it is given in the question symbolic, that is S3n. Here S3n is the sum of three terms, three n terms. So S3n means sum of three n terms, and S3n equals A into R raised to 3n minus 1 upon R minus 1. So we have the values Sn, S2n and S3n. So according to this statement, we have to verify that LHS to RHS or RHS to LHS as your wish. Now, since S3n minus S2n, using here because it is present in the LHS left hand side. So S3n minus S2n equals A into R raised to 3n, this upon A into R raised to 3n minus 1 upon R minus 1, minus A into R raised to 2n minus 1 upon R minus 1. This is the value of S3n and this is the value of S2n. We see that A upon R minus 1 common in both the terms. So taking common here, A upon R minus 1. In the bracket, remaining terms R raised to 3n minus 1 here, minus R raised to 2n minus 1. But if you open the bracket here, so minus into minus becomes plus. So we write here minus R raised to 2n plus 1. So we see that minus 1 and plus 1 get cancelled. So remaining term will be R raised to 3n minus R raised to 2n. So it is equal to A into R raised to 2n upon R minus 1, because R raised to 3n minus R raised to 2n. So R raised to 2n common in these two terms, where in R raised to 3n and R raised to 2n, because minus 1 and plus 1 get cancelled. So only two terms will be remaining. So R raised to 2n common in the next step. So we get A upon R minus 1 as it is, R raised to 2n common, new term which is common here. The remaining term will be R raised to n here and minus 1 here. So we get S3n minus S2n equals A into R raised to 2n upon R minus 1 into R raised to n minus 1. But LHS is Sn multiplied by S3n minus S2n. So now Sn into S3n minus S2n becomes A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 multiplied by A into R raised to 2n upon R minus 1 into R raised to n minus 1. This value.
this one, because here Sn multiplied by S3n minus S2n. So this is the value of S3n minus S2n. This is the value of Sn. This is the value of S3n minus S2n. So we substitute both the values and multiply here. Therefore, Sn into S3n minus S2n equals here A into A square, R raised to n into R raised to n minus 1 into R raised to n minus 1 becomes R raised to n minus 1 whole square, and this R raised to 2n as it is here in the denominator R minus 1 multiplied by R minus 1. So we get here in the denominator square of R minus 1. That is Sn into S3n minus S2n becomes A square into R raised to 2n into R raised to n minus 1 whole square upon R minus 1 whole square. And let it be equation first. So this part is completed for LHS, that is left hand side only. After that, we should take here RHS term. So in RHS, S2n minus Sn whole square present. So first we calculate here what is the value of S2n minus Sn. So S2n is A into R raised to 2n minus 1 upon R minus 1, and value of Sn here A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. So we subtract these two terms. So we see that here A upon R minus 1 common, and here R raised to 2n minus 1 minus R raised to n plus 1. So plus 1 and minus 1 will be cancelled, like as in the previous term. Here minus 1 and plus 1 cancelled. So similarly here minus 1 and plus 1 will be cancelled, and R raised to n common in these two terms. So R raised to 2n minus R raised to n. So taking R raised to n common here. So directly A into R raised to n upon R minus 1 into R raised to n minus 1 remaining term. According to the LHS term, you can write here value of S2n minus Sn is A into R raised to n upon R minus 1 into R raised to n minus 1. देखो जैसा यहाँ पर सॉल्व किए हो, similarly you can solve here also. If any doubt, you can ask in the comment section. Now, square of S2n minus Sn. So square of S2n minus Sn is A into R raised to n into R raised to n minus 1 upon R minus 1 the whole square, because this value present here. So taking square on both sides, so squaring on both sides, we get here A into R raised to n minus into R raised to n minus 1 upon R minus 1 whole square. This means S2n minus Sn whole square equals square of A, and here R raised to n whole square, that is R raised to 2n into R raised to n minus 1 whole square upon R minus 1 whole square, and let it be equation number 2. So we have two equations, here equation number first and here it is equation number second. So from equation first and second we get Sn into S3n minus S2n equals S2n minus Sn the whole square, because you can check here RHS of equation number 1. See this very carefully, whole part, and here RHS of equation number 2. Both are identical, or you can say both are equal. Therefore, their left hand sides will be same. So according to these two statements, you can say from equation number 1 and 2, Sn multiplied by S3n minus S2n equals S2n minus Sn whole square. And this question finished. Now question number 11th. Find first one, summation r equal to 1 to 10, 3 into 2 raised to r. Or you can say it is, this letter is known as sigma, S-I-G-M-A, and this is the capital sigma in the Greek alphabets. So you can say, and this represents sum of many terms, sum of the 10 terms from r equal to 1 to 10. So it can be written as 3 multiplied by 2 raised to r. So read as summation r equal to 1 to 10, 3 into 2 raised to r. And its second question is summation r equal to 1 to 10, 5 into 3 raised to r. ओके तो इसका आगे एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द समेशन एंड हाउ इट कैन बी एक्सपैंड एंड हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड.
See the solution. Question number 11th first. Summation r equal to 1 to 10, 3 into 2 raised to r. So here 3 is constant. What is 3? 3 is constant. It is not related to r. So you should write it 3 into summation r equal to 1 to 10 of 2 raised to r. सिर्फ यहाँ पर 2 raised to r और 3 को बाहर कर सकते हो यहाँ पर because it is constant and independent of r and here it is multiplied. So we should write here 3. So what is the meaning of summation r equal to 1 to 10 of 2 raised to r? So value of 2 raised to r from 1 equal to 10 is 2 raised to 1 because it is in index. So 2 raised to 1 and summation means होता है sum of all terms. So we should write here 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 plus 2 raised to 3 plus 2 raised to 4 and so on up to plus 2 raised to 10 means from 1 to 10. ये है सभी टर्म्स का सम दैट इज सभी टर्म्स का एडिशन. Here 3 is constant, we write as it is. We see that the bracket terms are in GP where first term a equal to 2 and common ratio r is also 2. 2 square upon 2 becomes 2. So 3 into a r raised to n minus 1 upon r minus 1, that is 3 multiplied by 2 into 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1. So here 2 minus 1 that is 1, तो denominator यहाँ 3 upon 1 is 3 और 2 into 2 raised to 10 minus 1 but 2 raised to 10 is 1023 और यहाँ पर हो गया 3 into 2 becomes 6 और 2 raised to 10 1024 minus 1 here it is 1023 so 6 into 1023 becomes 6138 means 6138. तो ये रहा हमारा इसका आंसर which is means yeah summation r equal to 1 to 10 of 3 into 2 raised to r equals 6138. So dear student, these two questions are very important or you can say most important for the competitive exams or other exams also. And they are very helpful to find the sum of long terms or how to denote in short form sum of a long term series. Second part, summation r equal to 1 to 10 5 into 3 raised to r. So here 5 is constant, so you can take out here, we write here 5. Now it is r equal to 1 to 10 3 raised to r only because 5 is out of the sigma, out of summation. तो इसकी मीनिंग क्या है? सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा बट वी रीड एज r summation r equal to 1 to 10. So 5 multiplied by, we put the value of r from 1 to 10 in 3 raised to r. So we get here 3 raised to 1 plus 3 raised to 2 plus 3 raised to 3 r3 cube. Here 3 raised to 2 r3 square you can say plus and so on plus 3 raised to 10 is the last term. So here a equal to 3 and they are also in GP. So a equal to 3 and r means common ratio 3 square upon 3 becomes 3 and r is greater than 1 also. So we apply formula Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. जैसा कि अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने Sn फार्मूला वहां पर लिखा हुआ है. तो Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. You can check it again if you don't know. So r equal to 1 to 10, 5 multiplied by 3 raised to r. Here it is 5 multiplied by 3 into 3 raised to 10 minus 1 upon 3 minus 1. And it is 5 into 3 becomes 15 and 3 minus 1 becomes 2. So it will be 15 by 2 and 3 raised to 10 is so large number. So we write here 3 raised to 10 minus 1 as it is. And this is the final answer for question number 11th second. If you are interested, so you can expand it also 3 raised to 10 minus 1 and becomes this answer, then multiply by 15, then entire upon 2 like as this answer. Now see question number 12th. अब देखो 12th क्वेश्चन में यहां पर क्या आने वाला है. 12th क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द वैल्यू ऑफ अ हाउस appreciates 5% per year. This means the value of a house increased by 5% per year.
So how much is the house worth after 6 years? If its current worth is rupees 15 lakh. And given that 1.05 equal to 1.28 and the value of 1.05 whole raised to 6 is 1.34. So meaning of the question here, the value of a house appreciates 5% per year. So how much is the house worth after 6 years if its current value is rupees 15 lakh? It is given that 1.05 whole raised to 5 equal to 1.28. This value, see once again, 1.05 is whole raised to 5. 1.05 whole raised to 5 is 1.28 and 1.05 whole raised to 6 is 1.34. So now see its solution. The present value of house is equal to rupees 15 lakh, it is given. This means the first term A equal to 15 because it is already given A equal to 15 lakh. The value of house 5% increases per year. So R equal to 1 plus 5 upon 100. We should take here R, which is known as common ratio for SGP. So R equal to 1 plus 5 upon 100 whole 1 plus 5 upon 100, that is 105 upon 100 equals 1.05. We need to find value of house after 6 years, that is n equal to 6 plus 1, that is 7. We should take n equal to 7 because we need to find after 6 years. So it will be in T7th, it will be in T7th after 6 years. Since Tn equal to A into R raised to n minus 1, so using this formula, we get T7 equals 15, which is value of A multiplied by 1.05 whole raised to 7 minus 1. So it is equal to 15 multiplied by 1.05 whole raised to 6. And it is given that 1.05 whole raised to 6 is 1.34. So we should write here 15 into 1.34 because this value is given already in the question. So 15 into 1.34 becomes 20.1. Therefore, value of house after 6 years rupees 20.1 lakh. So phi it is given 1.05 whole raised to 5 equal to 1.25, it is given for if anyone can take Tn, that is the value of house after 6 years. If anyone can take here, this value is previously given 15. Okay, so if we take here A into R raised to n minus 1, sometimes some students can take A is 1.05 and R is also 1.05. So you should multiply by 1.05 into 1.05 whole raised to 5. So 1.05 one time already present out of the bracket. So you can take this value 1.05 whole raised to 5 becomes 1.28. So 1.28 into 1.05 again we get 1.34 and then 15 multiplied by 1.34, that is 20.1. So value of house after 6 years rupees 20.1 lakh. Or you can find this question also by using the formula for compound interest. A equal to P into 1 plus R upon 100 whole raised to n. But you should take here principal amount 15 lakh and R equal to 5%. So 1 plus 5 upon 100 whole raised to 5. Sorry, whole raised to 6 because n equal to 6 here. So if anyone can take the amount A equal to P 1 plus R upon 100 whole raised to n. So put there n equal to 6. If you are using GP formula, so you should apply this one for Tn equal to A into R raised to n minus 1. That is, we should take n equal to 7. Now take question number 13th. If one invests rupees 10,000 in a bank at a rate of interest 8% per annum. So how long
does it take to double the money by compound interest? And given that 1.08 whole raised to 5 equal to 1.47. Attention here, 1.08 whole raised to 5 equal to 1.47. So for the solution, let the money will be doubled in n years. We know that a equal to p into 1 plus r upon 100 whole raised to n. तो यही फार्मूला मैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी यहाँ पर डिक्टेट कर रहा था, जो अभी भी मैंने ओरली एक्सप्लेन किया। सो इस फार्मूले के हेल्प से भी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया जा सकता है। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो इस फार्मूले के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये n ईयर्स में डबल हो जाएगा, मीन्स अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000, तो ये आफ्टर n ईयर्स इट विल बी 20,000। इसका मीनिंग ये हो गया कि a फॉर है अमाउंट और यहाँ है p फॉर प्रिंसिपल, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनम एंड n इज नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम। तो हियर a इक्वल टू 20,000 बिकॉज द अमाउंट विल बी डबल्ड, सो 10,000 का डबल 20,000 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% पर एनम और p प्रिंसिपल रुपीज 10,000 यहाँ पर है। यूजिंग दिस फार्मूला a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 इस फार्मूले से करके दिखाया और क्वेश्चन नंबर 12 tn फार्मूले से, कि दोनों से ही हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग tn फार्मूला यूज करते हैं तो वी शुड टेक n इन +1, और इस फार्मूले से यूज करते हो तो n की वैल्यू वही रखनी है जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो आते हैं फिर इस क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ a 20,000, द वैल्यू ऑफ p 10,000, वैल्यू 1 प्लस r अपॉन 100 दैट इज 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल रेज टू n। वी नीड टू फाइंड n। हियर 1 प्लस 8 अपॉन 100 दैट इज 108 अपॉन 100। तो देयरफॉर हियर अब ये क्या होगा, देखो 20,000 इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल रेज टू n। So taking 10,000 on the left hand side, we get 20,000 upon 10,000 equals 108 upon 100 whole raised to n. Here 20,000 upon 10,000 becomes 2 and it is equal to 1.08 whole raised to n. 1.08 whole raised to n. अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि 1.08 whole raised to n and here it is 2. So how can you calculate the value of n? सबसे जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम एक ही काम कर सकते हैं कि टेकिंग nth रूट ऑन बोथ साइड वी गेट वैल्यू ऑफ n। तो वहां से भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ 2 रेज टू 1 अपॉन n हो जाएगा और ये 1.08 ओनली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास गिवन टर्म क्या है। देखो गिवन टर्म यहाँ पर आ जाओ 1.08 होल रेज टू 5, तो 1.08 होल रेज टू n यहाँ पर है। इसका मीनिंग है कि n जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 में ही हमको निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर हम लोग देखें कि 1.08 होल रेज टू 5 इसकी वैल्यू क्या है 1.47, तो दिस इज वेरी लेस देन 2, 1.5 भी नहीं टच कर रहा है, तो ये डबल तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं, 1.47 है। तो n की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। तो आइए अब क्या करते हैं, अभी हमें 6 की वैल्यू तो दी नहीं कि यहाँ पर होल रेज टू 6, होल रेज टू 7, होल रेज टू 8, होल रेज टू 9 सब कुछ दिया है, नॉट गिवन। तो हमें क्या करना होगा कि इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो यहाँ टर्म है देखो, सिंस 1.08 होल रेज टू 5 इक्वल टू 1.47, ये है हमारे पास गिवन टर्म, हमने यहाँ पर देखो लिख भी दिया है गिवन। तो अभी ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे मीन्स इसी टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देयरफॉर 1.08 होल रेज टू 5 इंटू 1.08 होल रेज टू 5 ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग के साथ। तो अब यहाँ पर 1.47 इंटू 1.47 जो ये वैल्यू ये भी अपना स्क्वायरिंग हो गई, तो ये भी मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ ट्वाइस। तो 1.08 होल रेज टू 5 इंटू 1.08 होल रेज टू 5, अब ये दोनों का बेस तो सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, पावर भी सेम है। तो 1.08 होल रेज टू 10, वैसे भी अगर स्क्वायरिंग करोगे तो 2 5 या 10 होल रेज टू 10 ही रहेगा। और यहाँ पर 1.47 इंटू 1.47 ये हमें देता है 2.16 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 2.16 ये जो वैल्यू है ये 2 से तो थोड़ा ज्यादा है, मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 2.616 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 अज्यूम करते हैं। तो दैट इज 1.08 इज होल रेज टू 10 इज अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट का साइन है, अप्रॉक्सीमेटली 2। और ये हमें चाहिए था कि 1.08 का कितना पावर 2 के इक्वल होगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब देखो 2 इक्वल टू 1.08 होल रेज टू n और यहाँ भी है 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.08 होल रेज टू 10। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंपेयर इट, we get 1.08 whole raised to n equal to 1.08 whole raised to 10। ठीक है, चाहे तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट का भी साइन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 10। इसका मीनिंग ये होगा कि जो अमाउंट है दैट विल बी डबल्ड इन 10 ईयर्स, हेंस द प्रिंसिपल और यू कैन से मनी विल बी डबल्ड इन 10 ईयर्स। तो n की वैल्यू जो आई यहाँ पर 10 आई। वैसे अगर आजकल नॉर्मली अगर यहाँ पर कैलकुलेटर से करते हो कि 1.08 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स एंड इट बिकम्स 2, तो अगर ये चेक करके देखोगे तो ये देखा जाता है कि 1.08 होल रेज टू 9, इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 1.999 आ जाता है। तो ये 1.9999 ये जो आता है यहाँ पर इट इज वेरी क्लोज टू 2, तो हम लोग 9 ईयर्स अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा कि दैट वन इज 9 ईयर्स ओनली व्हेन दिस वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें इसका यूज करके ये बताना है कि 1.9999 4 टाइम्स आएगा, तो वहां पर भी वो डबल तो नहीं है बट इट इज वेरी क्लोज टू 20,000, तो वहां पर डबल हो रहा है और ये डबल से उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो ये दोनों ही केसेस में ये हमारा जो n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 9 ये दो वैल्यूज आते हैं। तो क्लियर कर रहा हूं कि अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो इसका आंसर n इक्वल टू 9 हो सकता है। If this value is given, so we should take always in terms of that value, तो 1.08 raised to 5 या इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाता है n इक्वल टू 10, जो कि यहाँ पर डबल होता है, मतलब 9 और 10 के बीच में ही डबल हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या पकड़ना पड़ेगा 10 ईयर्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर भी हमें जो प्रिंसिपल लेना है वो लेना है 15 लाख, आर की वैल्यू लेनी है 5%, तो ये हो जाता है अपना 15। डायरेक्टली यू विल रीच दिस टर्म कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 105 अपॉन 100 होल रेज टू 6। तो हमें ये टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करके, और हमें होल रेज टू 6 की वैल्यू यहाँ दी है तो उसको भी ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंच सकते हो। तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, जो कि a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n। तो ये अमाउंट देता है, हम लोग इसको कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला इसलिए बोलते हैं कि जब हम a माइनस पी करते हैं तो इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है और वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 2.2 completed for the chapter number 2, and you are solving geometric progression, which is very important chapter for the board exams as well as for the college exams or any other exams, and so much important for the competitive exams। तो अभी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस और रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।